I want to know about your journey discovering you. Like my journey discovering me. Yeah. And finding, and you know, like, and not just finding yourself, like owning your own space. Yeah. That's a very important thing that लोगों को यहाँ पे नहीं कोई इतनी बात होती इस बारे में कि how do you own your own space? Like this is which whatever space that you're occupying to truly own it. I feel कि ये work in progress है और I feel कि ये होता रहेगा. ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी अपने साथ comfortable हूँ तो बस ठीक है, ये सही है. I think कि आहिस्ता 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 बेहतर होता जाएगा. मुझे ऐसा लगता है कि अपने साथ वक्त गुजारना और मजबूरन नहीं choose करना खुद को over others का other company, like you know, if choose yourself first. Definitely, like if I have friends, I love my friends, but there is a time where if my friends are gonna ask me कि चलो बाहर चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, I'd be like, I'm just gonna sit by myself, watch something, listen to a little bit of music, dance, look at myself in the mirror. I know it's some people will think I'm obsessed with myself. You can think I am obsessed with myself because क्योंकि हमारे शुरू के कुछ साल, हमारे पूरे 20s, हम अपने आप को हेट करने में लगे रहते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, इसने हमें ये कहा था, मैं पतली नहीं हूँ, मैं इतनी फिट नहीं हूँ, मैं अब मोटी हो गई हूँ, अब मैं बहुत पतली हो गई हूँ, मैंने एक्टिंग ठीक नहीं की, इसको मैं अच्छी नहीं लगी, वो मेरे बारे में ये सोच रहा है. And then you know what? After a while you just realize, hey, look at me. I'm unbelievable. Look at me. मतलब खुद को आप सिर्फ प्यार से अगर देखना शुरू करेंगे तो आपकी जर्नी कितनी आसान हो जाएगी. और अपने साथ मतलब अगर मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारती हूँ और मीटिंग्स हो या शूट हो, उसके बाद जो मेरा डे ऑफ आता है वो लाइंड अप होता है कि मैं किसी से बात भी नहीं करूँगी. मेरा फ़ोन बिल्कुल दूर होता है, साइलेंट पे होता है और सिर्फ मैं होती हूँ और मैं होती हूँ और बहुत मजा आता है. Brilliant. बहुत मजा आता है. No, it's really fun. I love spending time with myself, and I thoroughly enjoy it. And initially, I remember and you're right, in my 20s also, I also felt the same way, that I was, I think, giving too much of myself to everything around me. Definitely. And I think in my 30s, I curtailed it and brought all of that back within me. आहिस्ता आपको होता है कि वो moment क्या था when you saw yourself in the mirror and you I think viewed yourself differently? I think कोई एक moment तो particularly मुझे याद नहीं है. I know that traveling really helped me a lot. I traveled by myself a lot. In the past 2 years, everyone keeps asking me कि तुम कहाँ चली गई थी? Where did you disappear to? I didn't disappear. I was actually looking for myself, you know. And I went to Italy. I lived there for 3 months. I went on this little trip, Euro trip, and I kept going from country to country to country to country in Europe for a few months. Then I lived in Budapest for a few months. Then I lived in the US for a few months. And I fell in